अनबॉक्स शुरू करने से पहले मैंने कल एक्चुअली एक ट्वीट किया था. हाउ शुड वी एड्रेस द न्यू एप्पल आईफोन्स? ऑप्शन 1 XS, XS Max. ऑप्शन 2 10S, 10X Max. ऑप्शन 3 औकात के बाहर. And obviously 425 people voted and you can see 84% majority thinks the new iPhone should be called औकात के बाहर. Rajiv Makhni thinks extra small and extra small max, that is 10 times औकात के बाहर. Of course, दिल्ली से हैं तो his sense of humor थोड़ा. Hello, welcome to a brand new video on Tech2. I'm Ankit Vengurlekar और आज का वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग है. काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं हम हमारे क्यूपर्टिनो के असाइनमेंट और कंसाइनमेंट को पहुंचने के लिए. There you have it. If you can see the eyes from the sky, we have the iPhone 10X Max, the iPhone, sorry, this is the 10S Max, not 10X Max, that's a condom size. This is the iPhone 10S, a tampon size, and the iPhone 10S Max leather case. Please don't get offended by comparisons to tampons and condoms and all of that, क्योंकि frankly इस साल के जो sizes हैं, बड़ा है तो बेहतर है. Yes, जो iPhone के sizes हैं, they all sound very, very suggestive. Now that I have the cheapest joke out of the way, joke according to me, this side of Loperel, then this is the unboxing of the brand new iPhone 10s Max and iPhone 10s. तो बहुत कुछ नया है and बहुत कुछ बात करनी है इनके बारे में. So obviously if you have any questions, don't forget to hit up the comment section. But let's jump right in. Always been a fan of how minimal the iPhone packaging is. Oh, I think I'm going to shut up and give you an ASMR-ish experience of plastic. Hear this. All right. जो S सीक्वेंस के आईफोन्स होते हैं, they are always an incremental upgrade. पिछले साल, as you might remember, the iPhone 10 came out, which literally changed everything that we know about Apple iPhones, because iPhones used to look like this. एक familiar home button होता था, obviously horizontal assembly होती थी dual lens camera setup की, but the iPhone 10 changed all of that. For the first time, we had an edge-to-edge OLED display with nice popping out colors, something that we are very, very used to seeing on Samsung phones, and clearly because Samsung का panel Apple ने इस्तेमाल किया था for this gorgeous OLED screen. Okay, now so the iPhone 10s and the 10s Max build on that heritage. As you can see, box के size से ही पता चल जाएगा. There is a 5.8 inch iPhone 10 and a 6.5 inches. That's right, the biggest one ever. Please don't think these sentences are suggestive or that I'm saying something else. Okay, all right, let's open this up. Beautiful, nice, solid boxes right there. Okay, another tiny design detail, and you gotta like Apple for all of this, right? यहाँ पे देख के ही पता चल जाएगा आपको कलर कौन सा है. Can you see it? There's of course the brand new golden on the iPhone 10s and space gray on the iPhone 10s Max. Yeah, these tiny things. And another place where you can see the colors is of course right here. There's gold, there's space gray, which almost might look black to you, but it's space gray. Okay, so booklet. Let's bring that out. The phones are right here. Let's see what do we have here. Hello, which is the iPhone 10s. Familiarization manual, जिसमें अगर आपने पहले iPhone कभी इस्तेमाल नहीं किया है, it talks about the hardware. Side buttons आपको press करने हैं Siri को जगाने के लिए, and you have to press it twice to activate Apple Play. पावर ऑफ करने के लिए राइट साइड एंड लेफ्ट साइड वॉल्यूम अप बटन दोनों एक साथ दबाने हैं. ऑल दीज थिंग्स, जैसे जेस्चर्स जो आपको इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि इसमें फेस आईडी है, होम बटन नहीं है. एंड ऑफ कोर्स फेस आईडी कैसे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. देयर इज ऑफ कोर्स अ सिम पिन
right here, nice addition. Remember, this is the first ever iPhone version जो dual SIM के साथ आएगा. That's right. लेकिन physical SIM tray सिर्फ एक ही है इसमें. जो दूसरा SIM कार्ड है वो आप eSIM, embedded SIM या electronic SIM कुछ लोग उसे कहते हैं, eSIM की फैसिलिटी आप यूज कर सकते हैं. फिलहाल एयरटेल और जियो के नेटवर्क पे ही है. और अभी अगर आप खरीदते हैं फ्रॉम द 28th of September जब आईफोन बिकने लगेगा, eSIM की सुविधा फिलहाल डीएक्टिवेटेड है. सो इवन दो जो सारे फोन यहां बेच रहे हैं इंडिया में वो बाय डिफॉल्ट डुअल सिम है, बट आई थिंक ओनली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, नवंबर दिसंबर, देयर इज नो स्पेसिफिक डेट, इज व्हेन the dual SIM service will be activated एक सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए. And of course, for all the fanboys and fangirls out there, दो Apple stickers. Okay, that's pretty much what you have in terms of all the pages or papers in the boxes. Okay, as you can see, brand new iPhone XS, 5.8 inches, XS Max, 6.5 inches. Let's bring them out. All right, let's peel off the plastic. Okay, so this is the stunning looking space gray 6.5 inch का phone. Let's just keep it right here. And whoa, let's say hello to that brand new golden color. Oh my God, look at that beauty. Okay, so this is the rose gold 8 Plus and this is the new golden. I hope you can tell the difference. It's quite stunning to look at. So almost rose gold, but not. And the big deal here is, of course, जो stainless steel, जो side में आपको stainless steel दिखेगा, the color is actually introduced at a molecular stage, and this is such an Apple thing कि बस ऊपर से लेप नहीं लगाया है गोल्डन का जो चिप ऑफ हो सकता है. at a molecular level इसमें कलर इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि ये तगड़ा बना रहे. And this is really shiny and blingy, and of course पीछे भी glass, आगे भी glass. Apple made it a point to say how this is the most durable glass on any phone, and this is of course Corning's version of Gorilla Glass for Apple iPhones. Let's just turn both of them on, and we have the familiar Apple logo shining right through. Hopefully in दोनों phones में थोड़ी battery होगी, so I can show you guys that. The big news here really is the 6.5 inch iPhone XS Max. अगर आपको याद होगा, स्टीव जॉब्स से किसी ने शायद पूछा था कि क्या एक बड़ा आईफोन कभी बनेगा क्या, एंड उनकी लेगेसी के मुताबिक तो शायद कभी नहीं बनता. लेकिन आई थिंक ये सारे जो रूल्स होते हैं ये बदल जाते हैं जब आप दुनिया की पहली $1 ट्रिलियन कंपनी बन जाते हैं. एंड ऑफ कोर्स उनका जो बिजनेस है, जो कस्टमर सेगमेंट है, उन्हें बढ़ाने के लिए किसी ज़माने में जैसे फैबलेट हम कहते थे, 6.5 इंच की स्क्रीन साइज वाला फ़ोन, वो आज नॉर्मल हो गया है. सो द 6.5 इंच iPhone XS Max, जो शायद स्टीव जॉब्स के डिज़ाइन लॉजिक के मुताबिक कभी नहीं बनता, उनकी मौजूदगी में वो फाइनली आ गया है एंड बन चुका है. एंड राइट आउट ऑफ द बॉक्स व्हाट यू कैन सी आर दीज नाइस पॉप OLED displays. Now you're gonna have to excuse me, and magically I'm going to set up these phones and be right back. Meanwhile, let's also unbox the case for the iPhone XS Max. Of course, this is the leather case, comes in a bunch of colors, and it costs only 4,500 rupees. This is of course the official case. Now I've been using the official silicone case for my iPhone X for a while, and it really offers great protection, great grip, because ये जो all glass phones होते हैं थोड़े slippery होते हैं, and जब आप 1 लाख रुपए का फोन खरीदेंगे तब ऑब्वियसली आप नहीं चाहेंगे कि आपका फोन गलती से स्लिप होकर नीचे गिर जाए. एंड इवन दो इट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट ड्यूरेबल glass is glass and all material cracks. Set up as new iPhone, set up as new iPhone. Okay, so minor difference क्योंकि iPhone XS Max 6.5 इंच का स्क्रीन है. You see this additional page in the setup जिसमें आप डिस्प्ले को थोड़ा सा जूम कर सकते हैं. मेरे ख्याल से 10 से 15% थोड़ा सा ये बड़ा हो जाता है जो इसकी आइकोनोग्राफी होती है. एंड ऑफ कोर्स आप जो तमाम वर्ड्स हैं वो भी आप बड़े कर सकते हैं. चूज अ व्यू, स्टैंडर्ड, जी हाँ स्टैंडर्ड. ओके, स्विच बिटवीन रीसेंट एप्स. नाउ इट्स शोइंग मी द जेस्चर्स. वेलकम टू आईफोन. ऑलराइट,
Okay, as you can see in the boxes, you have जो wired AirPods हैं वो आपको मिलते हैं, and you have this charging adapter which is in the box as well, and standard USB cable जो शायद 5 से 6 महीनों में डेफिनेटली यहाँ पे जो अटैचमेंट होता है वो खराब हो जाएगी, टूट जाएगी, या फिर आपकी गुम हो जाएगी चार्जिंग केबल और आपको और 2-3 हज़ार रुपए खर्च करने पड़ेंगे। दैट्स द ब्यूटी, राइट? आपका मेरा बहुत बड़ा योगदान है एप्पल की $1 ट्रिलियन कंपनी बनने में, बिकॉज ऐसी चीजें तो हम खरीदते रहते हैं बार बार एक नया एप्पल आईफोन खरीदने के बाद। नाउ आई हैव जस्ट वन बिग इशू। आज की तारीख में मार्केट में OnePlus 6 जैसे फोन्स हैं, ओप्पो के जो तमाम फोन्स हैं जिसमें वूक एंड सुपर वूक फास्ट चार्जिंग अवेलेबिलिटी है, यू नो स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स आप अपने ओप्पो फोन्स को या OnePlus फोन को चार्ज कर सकते हैं 30 मिनट्स में। आपको लगभग 70 to 80% बैटरी लाइफ मिल जाती है। दैट इज द अमेजिंग टेक्नोलॉजी जो आज की तारीख में अवेलेबल है। लेकिन एप्पल आईफोन XS और XS Max का जो चार्जर है ये महज एक 5 वॉट चार्जर है। जो पूरी की पूरी बैटरी है, एंड द आईफोन XS Max इज अ बिग फोन, दिस इज द बिगेस्ट बैटरी दे हैव मेड सो फार। इसे चार्ज करने में इजीली 1 से 2 घंटे लग सकते हैं। फास्ट चार्जिंग कंपैटिबल है, लेकिन फास्ट चार्जिंग करने के लिए आपको अलग से जो 12 वॉट या 29 वॉट जो मैकबुक प्रो जैसा तगड़ा चार्जर होता है, जिसका अडेप्टर काफी बड़ा होता है, मैकबुक प्रो लैपटॉप का अडेप्टर आपने देखा होगा, उसे अलग से आपको खर्च करने पड़ेंगे मेरे ख्याल से 5 से 7 हज़ार रुपए वो खरीदने के लिए। बट द फोन लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग। आई एम लुकिंग एट द XS Max बिकॉज फ्रैंकली अगर आपको 2018 का नया आईफोन लिया है और किसी को दिखाना है, इट हैज टू बी द XS Max। इफ आई जस्ट शो यू दीज टू, हार्डली आपको कुछ फर्क महसूस होगा, राइट? आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें से 10 और XS कौन सा है, एक्सेप्ट फॉर द गोल्ड कलर जो शायद छिप जाएगा अगर मैं इसके ऊपर कोई भी केस चढ़ा दूं तो। सो मेरे ख्याल से XS Max इज गोइंग टू बी द वन दैट गेट्स सोल्ड द मोस्ट and is also the more expensive of the lot. So let's talk about the prices. The iPhone XS or XS Max, XS 64GB शुरू होता है 99,900 से, XS XS 256GB is at 1,14,900, 512GB is 134,900. XS Max 64GB starts at 1,09,900. 256GB 1,24,900, लगभग 15,000 रुपए का डिफरेंस है सिर्फ एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए। एंड XS Max 512GB जो ये मॉडल है पर्टिकुलरली, इट्स द मोस्ट एक्सपेंसिव स्टैंडर्ड प्रोडक्शन स्मार्टफोन सोल्ड इन इंडिया, 1,44,900 रुपीज। इसे जेब में रखने के लिए भी मैं डर रहा हूं, बिकॉज गॉड फॉरबिड अगर कुछ भी हो गया इसे 1.5 लाख रुपए का फटका किसी को भी बैठ सकता है। बट आई हाईली रिकमेंड, जब भी आप ऐसा कोई भी महंगा फोन लेते हैं या कोई भी स्मार्टफोन लेते हैं, आज की तारीख में मोबाइल फोन इंश्योरेंस आते हैं, सिस्का वगैरह अलग अलग कंपनियों के आते हैं। यू जस्ट स्पेंड जस्ट अ couple of hundred or couple of thousand rupees and this big investment of yours is insured. Big deal of course on the brand new iPhones है 2-3 चीजें। The big size on the XS Max, the A12 Bionic chipset जिसमें ब्रांड न्यू CPU जो 15% फास्टर है, ब्रांड न्यू GPU जो 50% फास्टर है, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम अ डेडिकेटेड न्यूरल इंजन व्हिच हैज the capability of 5 trillion operations per second. So the A12 Bionic is the superstar इस पूरे फोन के अंदर। आप ऑब्वियसली कभी चिपसेट या SoC देख नहीं पाओगे, बट जब आप इस्तेमाल करोगे फोन तो iOS 12 के कॉम्बिनेशन के साथ जो परफॉर्मेंस एनहांसमेंट्स है ये आपको डेफिनेटली महसूस हो जाएंगे, स्पेशली जब आप गेमिंग करते हैं हाई फिडेलिटी हाई इंटेंसिव ग्राफिक्स वाले गेम्स। ऑगमेंटेड रियलिटी के ढेर सारे एप्स इसमें बहुत ही मक्खन चलने वाले हैं, ये एप्पल का दावा है। एंड ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द कैमरा। इट्स रेजोल्यूशन वाइज इज द सेम, 12 मेगापिक्सल के डुअल कैमरा है जो आप देख सकते हैं। देयर इज आल्सो अ ट्रू टोन क्वाड LED फ्लैश व्हिच अडैप्ट्स अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग एंड लाइटिंग, आपको बढ़िया फ्लैश दे देता है। नाउ देयर इज अ 26 मिलीमीटर एंड 52 मिलीमीटर फोकल लेंथ, दो कैमरा है, एंड देयर इज एन f1.8 एंड f2.4 फोकल लेंथ वाले
दो जो कैमरा सेंसर्स हैं, ऑफ कोर्स द सेंसर साइज इज इंक्रीज एंड सो हैज द पिक्सल साइज, ताकि जो लो लाइट इंफॉर्मेशन है वो बेहतरीन कैप्चर हो। विद स्मार्ट HDR एप्पल नाउ क्लेम्स ढेर सारे फोटोज एक साथ ले लेता है लो एक्सपोजर हाई एक्सपोजर में, एंड विद स्मार्ट HDR इट शुड गिव यू एक्सलेंट नेवर सीन बिफोर ब्राइट बैकलाइट में भी बढ़िया क्रिस्प फोटोग्राफी। वीडियो के मामले में दिस कंटिन्यूज टू बी द मोस्ट फीचर पैक्ड फोन। ऑब्वियसली देयर इज ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन रियर कैमरा में एंड फ्रंट कैमरा में भी, एंड 4K रेजोल्यूशन पे 60 FPS पे आप शूट कर सकते हैं, दैट इज फिनोमिनल। स्लोमो अगर करना है तो देन 1080p रेजोल्यूशन पे 240 फ्रेम्स पर सेकेंड पे आप स्लो मोशन वीडियो शूट कर सकते हैं। नाउ क्लियरली इन टर्म्स ऑफ फीचर्स इट्स फीचर पैक्ड। ऑफ कोर्स देयर इज अ नॉच ऑन फ्रंट, ऑफ कोर्स देयर इज अ ट्रू डेप्थ कैमरा, आप फेस आईडी में इस्तेमाल करेंगे। ऑफ कोर्स देयर इज नो होम बटन, देयर इज नो फिंगरप्रिंट आईडी, ऑफ कोर्स देयर इज नो हेडफोन जैक, इसमें सिर्फ लाइटनिंग पोर्ट दिया गया है। ऑफ कोर्स इस बार बॉक्स में डोंगल भी नहीं है, जो 3.5mm जैक टू लाइटनिंग वाला डोंगल पिछले साल उन्होंने बॉक्स में इंक्लूड किया था, दैट्स नॉट देयर। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो एप्पल स्टोर में जाके आप खरीद सकते हैं, बट एप्पल के मुताबिक उनका जस्टिफिकेशन ये है, दे आर रियली ट्राइंग टू अशर इनटू अ कंप्लीटली वायरलेस इकोसिस्टम एंड यूनिवर्स। तो वो चाहते हैं कि आप वायरलेस ईयरफोन्स या हेडफोन्स इस्तेमाल करें, उसके लिए अलग से पैसे आपको खर्च डेफिनेटली करने पड़ेंगे। सो दिस इज जस्ट अ वेरी वेरी अर्ली हैंड्स ऑन। जैसे ही हमें बॉक्स मिला है, we've just sort of opened it right in front of you. I have not done anything else. Just going to slap on the case onto the iPhone XS Max because really it's huge. There you go. Oh wow, I love the feel of this case. It's a nice case, fits nice and snug. Apple official जो accessories होती हैं, obviously they fit really beautifully. And IP68 certified phone है, तो वैसे तो इसको केस की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप इसको स्विमिंग पूल में, पूल पार्टी में, या फिर बीच पे, या जब विनयार्ड में जाके वाइन पी रहे हैं, आराम से कहीं पे भी आप इसे ले जा सकते हैं। बारिश हो रही है, आप आराम से इसके साथ शूट कर सकते हैं, कॉल ले सकते हैं, ऑल ऑफ दैट। But still, I like keeping a case because I'm conservative like that. So if you have any questions about the brand new iPhone XS and the XS Max, don't forget to write to us in the comments section, and hopefully हम इस फोन्स के साथ 2-3 दिन बिता के निमिषया में एक AMA करेंगे, आस्क मी एनीथिंग करेंगे, ताकि आपके सारे सवालों का जवाब आपको दे सके। एंड ऑफ कोर्स स्टे ट्यून टू tech2.com बिकॉज व्हाइल आई एम ऑफ टू चंडीगढ़ ब्रांड न्यू GoPro Hero 7 Black के साथ मस्ती करने के लिए, निमिष इज गोइंग टू बी डूइंग अ थरो रिव्यू ऑफ दिस। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू बी टेकिंग वन ऑफ दीज ओवर देयर स्विमिंग पूल में मस्ती करने के लिए। बट लेट अस नो व्हाट यू थिंक ऑफ इट। द ब्रांड न्यू iPhones 28 सितंबर से इनका सेल शुरू होने वाला है। क्या आप लाइन में खड़े रहने वाले हैं 1 लाख रुपए एक पेटी रोकड़ा लेके? Are you going to be there in the line to buy any of these brand new phones? या फिर you're going to sit this out and maybe wait for the iPhone XR? Let us know in the comment section what you think about these brand new devices. This is one of our first unboxing videos on Tech2, so spread the love, share this video जिसके साथ भी आप share करना चाहेंगे, and let us know how you found it. In case you haven't already, please subscribe to Tech2's YouTube channel as well. This is Gadgetwala signing out. Thank you so much for watching.